Okay, let me start the recording. Okay, what is hardness? Hardness basically is the unwanted characteristic of water. Why it is unwanted? Because it prevents the lathering of soap. It does not allow soap to dissolve in it. So as a result, we try to consume more amount of soap in order to get the desired level of lathering. So uh, hardness basically it increases the amount of soap which directly affects the cost of the process. So the water which has this characteristic is termed as hard water. Basically, hardness in water is caused by the calcium and magnesium compounds, and water basically dissolves these compounds, and as they are soluble in water, and when these compounds are present in water, they basically inhibits the salt to dissolve. And the reason of presence of these salts in water are multiple. Maybe water picked them up from the earth or from the earth's surface, from where it started travel. Usually, we represent hardness as total water hardness, and total water hardness includes both the hardnesses uh, caused by calcium and magnesium compounds. Usually, it is represented in concentration units, parts per million, or weight by volume, or milligrams per liter. And most of the time, calcium hardness is more than magnesium hardness, but it all depends upon the composition of the earth surface or the bed composition from which we are taking the water. So it all depends upon the geological or geographical location of the source of water. Then there are two types of water hardness: temporary or carbonate hardness, permanent hardness, or non-carbonate hardness. Let's see what is temporary hardness. This hardness basically is caused by the bicarbonate salts of calcium and magnesium. And if we have water which has temporary hardness, if we heat this water, the bicarbonate salts convert into carbonate salts, water, and carbon dioxide. And carbonate salts are insoluble in water, so they get precipitated immediately. So, yes, through heating, boiling, we can remove the temporary or carbonate hardness of the water. Car- Carbonate precipitates will settle down in the water, while CO2 will leave the water in the form of gas. Next one is permanent or non-carbonate hardness. Permanent or non-carbonate hardness is caused by the uh, sulfates and chloride salts of calcium and magnesium. And we cannot remove this hardness by mainly heating. Because if we start heating the water which has permanent hardness, the increase in temperature will increase the solubility of sulfates and chlorides in water. So basically, if we try to improve the hardness by heating, uh, this process in case of permanent hardness, in fact, will increase the hardness in water because the raise in temperature is increasing the solubility of permanent hardness causing salts. So heating is not the option in case of permanent hardness. We need to look for some other technology or process, and they are basically uh, common examples of those processes is to use a water softener और an ion exchange column. जो परमानेंट हार्डनेस है वो सल्फेट्स और क्लोराइड सॉल्ट की वजह से होती है और इसको हम हीट करने से रिमूव नहीं कर सकते जैसे टेम्परेरी हार्डनेस को किया था. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम टेम्परेचर रेस करते हैं तो सल्फेट्स एंड क्लोराइड सॉल्ट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज इन वाटर.
जब उनकी solubility बढ़ जाएगी तो उल्टा उनकी hardness और बढ़ना शुरू हो। So heating is not the option here. We have to look for other techniques, commonly known as use of a water softener or ion exchange column. Again, different units representation of water depending upon the concentration level of hardness causing salt. We can represent the hardness in ppm, milligram per liter, or degree class. What are the problems which are caused by the hard water? Let's see them. Hard water causes scaling. Scaling basically is the precipitation of minerals to form a hard rock layer on the inner sides of the pipeline. As we know, hard water will have salts. So when this water is flowing through a pipeline, or if we are boiling this water in a boiler in industry in order to get steam. So when water will boil, the salts present in it will deposit onto the surfaces. And with passage of time, the thickness of the layer thickness of these deposited salt will increase slowly. So one point will reach that there will be a huge thick layer of these salts in the boiler, especially, and this will reduce the capacity of the boilers. And secondly, uh, uh, this layer is an resistor to the heating. So it will also disturb the heat transfer in the boiling because it acts as a resistor. So for sure, in case of industry, we do not want hard water because it is going to cause scale. For domestic purposes, as I already told you, the hard water requires more soap in order to get the desired level of washing. So it asks for a higher amount of soaps, which directly affects the cost of the washing process. With respect to human body, the salts present in the water will deposit on our skin, and they will form a salt layer, which is termed as curd. So uh, simply by rinsing with water, this layer of curd cannot be removed. So this curd basically clogs the pores of our skin, and it can act as a medium for bacterial growth. It causes skin irritation, and it keeps the skin dry every time. So these are some problems which are caused by hard water. Again, it will cause scaling in industry. It will ask for more soap in washing process, and it will form curd on our skin. So these are the reasons for which we need to convert hard water into a soft water. So in order to convert hard water into soft water, we need to pass it through softening processes. And these three are the most commonly used processes for softening of hard water: lime soda process, zeolite or permuted process, and reverse osmosis process, or normally RO process we can say. Lime soda process is the most widely used water softening process, and it basically converts the soluble salts of calcium and magnesium, the salts which are causing hardness, into insoluble salts. When the soluble salts are converted into insoluble salts, they precipitate immediately, and then they settle down the bottom of the vessel. So as a result, we are able to remove the hardness. In this case, we will use a mixture of calcium and soda, lime and soda, as the name suggests. So calcium hydroxide basically reacts with the salts who are causing hardness in water. It will convert the soluble salts into insoluble salts like calcium carbonate, magnesium hydroxide, iron hydroxide, and as a result, we are able to reduce the hardness of the water. There are two ways through which we can carry out lime soda process.
cold lime soda process and hot lime soda process. So as the name suggests, cold lime soda process takes place at normal temperature pressure conditions, and the hot lime soda process takes place at high temperature and in some case at high pressure also. So basic characteristic of cold lime soda process is it is used for municipal water treatment. In it, we basically, as per the identified amount of hardness, we calculate the amount of lime and soda required to reduce the hardness of water. When we add lime soda into the hard water, it precipitates and forms uh, precipitates which are of very fine size. If these precipitates do not settle down easily, then we have to add a coagulant which will form flocs and it will ease out the settling of flocs. At the end of the process, whatever was the hardness of the hard water, after passing through cold lime soda process, the residual hardness of the soft water is 50 to 60 ppm. This is sort of process of a cold lime soda vessel or tank. So let's see it. So this is a tank, right? And at the center of the tank, we have stirrer which can rotate around this shaft. And we have added this stirrer in order to ensure the um, good or proper mixing of hard water with the coagulants. At the bottom of the tank, we have a valve through which we remove the precipitates which are formed during this cold lime soda process. So from the top of the tank, we introduced hard water. It goes into the steering section of the vessel. And from the other side, we add softening, water softening salts. With the help of these steers, hot water and the water softening salts mixes with each other, and when this mixing takes place, the precipitation of insoluble salts starts. When water comes out from this central section, it will start filling up this outer section of the vessel. If the precipitates formed are of large enough size, they will settle down at the bottom of the tank. If still they are finely sized and they are not settling down, in fact, they are moving with water towards the upper section of the tank, then we have installed a filter. Now, the job of this filter, in this case, it's wood fiber filter. The job of this filter is to hold those fine precipitates which did not settle down. So this filter will filter out those fine precipitates, and we will get clear soft water at this top section of the vessel. And then once we have clear soft water, we will take out this from the top of the uh, cold lime soda tank. तो दिस इज द ऑल प्रोसेस. इसमें जो टैंक है उसके सेंटर में स्टीयरिंग सेक्शन है. एक साइड से हम रॉ वाटर हार्ड वाटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दूसरी साइड से वाटर सॉफ्टनिंग सॉल्ट. स्टीयर जो है वो इनकी मिक्सिंग गुड मिक्सिंग को इंश्योर करेंगे. जैसे ही मिक्सिंग होगी प्रेसिपिटेट्स बनेंगे. अगर प्रेसिपिटेट्स लार्ज इनफ होंगे तो वो बैठना शुरू हो जाएंगे बॉटम पे. अगर वो फाइन होंगे तो वो फिर वाटर के साथ ही इस टैंक को फिल करेंगे, यानी कि रेज होगा. क्योंकि वो हम कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन से फाइन प्रेसिपिटेट्स रिमूव नहीं कर सके, उनके रिमूवल के लिए हमने ये फिल्टर इंस्टॉल कर दिया. जब वाटर रेज होगा टॉप की तरफ मूव करेगा तो ये जो फाइन प्रेसिपिटेट्स होंगे वो इन फिल्टर पे रिटेन हो जाएंगे और क्लियर सॉफ्ट वाटर टॉप मोस्ट रीजन की तरफ जाएगा. और फिर उस क्लियर सॉफ्ट वाटर को हम टॉप ऑफ द टैंक से रिमूव करना शुरू करेंगे. जब प्रेसिपिटेट्स की लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी तो इस बॉटम स्लज आउटलेट से वी विल स्टार्ट रिमूविंग दैट precipitate layer. Any question about this? No, sir.
Okay. Then the next category of lime soda process was the hot lime soda process, and the water which soft water which we need at industrial scale that is being passed through this hot lime soda process, and the soft water which we get after hot lime soda process, in terms of industrial terminology, we call that soft water as boiler feed water. So, in comparison to cold lime soda process, hot lime soda process takes place at temperature in the range of 80 to 150 degrees C. The pressure usually is high. Why is that so? Because if the pressure is 180 m and the temperature of water is 100 degrees C, then at 180 m at 100 degrees C, the water will not remain in liquid state. It will convert. It will be converted into vapor. So, in order to have high temperature in the process and at the same time to keep the water in liquid state, we need to increase the pressure in this method. So, what is the advantage of high temperature in this process? Basically, this high temperature enhances the mixing process of hard water with the water softening salts. As we all know, if we increase the temperature of water, the solubility of any salt or most of the salt will increase in it. So, in order to get maximum mixing of water softening salts in hard water, we have to increase the temperature. And to keep the water at these increased values of temperature in liquid state, we need to raise the pressure of the system. क्योंकि हाई टेम्परेचर पे आउटलाइन सोडा नहीं होना है, और हाई टेम्परेचर इसलिए सेलेक्ट किया गया है ताकि सोलेबिलिटी जो वाटर सॉफ्टनिंग सॉल्ट्स हैं उनकी इंक्रीज हो सके इन वाटर हॉट वाटर, तो इसलिए हाई टेम्परेचर को फेवर किया गया। मगर हाई टेम्परेचर जब हम जाते हैं तो 1 एटमोसफेयर पे 100 डिग्री सी पे वाटर बॉयल हो जाता है और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमें तो लिक्विड स्टेट में वाटर चाहिए, तो इसलिए हमें फिर प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो एज ए रिजल्ट ये जो टेम्परेचर रेंज है इसके दौरान वाटर लिक्विड स्टेट में ही रहता है। So this is the you can say a schematic of hard cold lime soda process. This is the major vessel, and through this line, raw water or hard water goes into the processing tank, and through this line, the water softening salts go into the tank. From this point, we introduce steam at high temperature. When high temperature steam goes into this tank, it increases the temperature of the process, and at the same time it also increases the pressure of the process because we are filling this tank with steam. So whenever there is a gas which is having a high temperature, automatically in a contained vessel, its pressure will also increase. So steam will not only increase the temperature here, but also the pressure. So there is a vent. So if in case of emergency, somehow we are unable to control the pressure of steam within the vessel, because if we do not control the pressure of the gas within the vessel and it keeps on increasing, then a point will reach where a blast can take place. So to avoid such conditions, emergency situations, we always provide a vent valve in a gaseous system which is working at high temperature. So whenever the pressure goes beyond the desired value, it increases from the desired value and it puts the process in danger
this valve automatically opens up and steam leaves the vessel through this valve directly into the environment or in some other equipment. As soon as the pressure within this vessel comes back into the desired range, this valve automatically shuts off. And again, the process normally takes place. If again the pressure of the system raises, this valve will automatically open up. Steam will leave. When the pressure of the vessel becomes normal, it will automatically shut off. So the common example is uh, uh, of the valve which we place on pressure cookers during cooking in the kitchen. इसको हम जुबान में सीटी कहते हैं. So you might have observed कि थोड़ी थोड़ी steam उसमें से निकलती रहती है. So why that little amount of steam is coming out of pressure cooker through this nozzle? The reason is whenever the pressure goes beyond a certain value, the valves automatically open up. It allows the steam to go through it into the environment, and when the pressure becomes normal, it automatically shuts down. Okay, so this is the section where we calculate the amount of water softening salt required to remove the hardness in this hard water. It automatically measures, it controls the flow, and the proportional amount goes into the vessel along with the hard water. So because the temperature is high, the salt will dissolve in water, and the water after mixing with these water softening salts will follow this route, and it will start filling up this vessel. The precipitates will settle down while the soft water will raise up. If we have again some fine particles, fine precipitates which did not settle down in the vessel, then we will send this hard water following this line into these filters. The soft water following these lines, which is coming out from this vessel. Again, we are taking the soft water from the top of the tank. So this soft water following this line will go into this filtering mechanism, and after the filtration we will get clear soft water through this line, which is then sent towards the boiler. Of course, after filtration, the pores of the filters will block, and it will be blocked by the fine precipitates present in the stream. So we cannot, after the saturation or exhaustion of the filters, we cannot throw them. We have to regenerate them. So what we will do, we will take soft water through this line, and we will pump this water, and then we will pass this water through these filters in order to open up the blocks again. Openings again, block openings again. And after regeneration, after freshening up the filters, the water which now has some hardness causing salt which were attached to the filter surface will go back into the tank following this line. So this is the whole process. It's exactly a replica of a hot cold line soda process. तो अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर मैं वेंट तक मुझे समझ आई कि मतलब अगर हम प्रेशर कंट्रोल ना करें तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो उससे आगे कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन. तो वेंट इधर इंस्टॉल किया हुआ है कि जब स्टीम हम इन कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए. तो मैंने एग्जांपल दी प्रेशर कुकर. तो वो जब आप उसको हीट कर रहे होते हैं वो नॉर्मल होता है. जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता वाटर प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है वो हीट होता है, स्टीम बनती है. तो जो ऊपर हमने एक एलिमेंट रखा होता है जिसको हम जुबान में सीटी कहते हैं, वो स्लोली स्लोली हिलता है. जैसे जैसे हीटिंग टाइम बढ़ता रहता है
उसकी वाइब्रेशन या मोशन की जो स्पीड है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है कि जब सिस्टम उस प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर विद इन लिमिट है, तो ऊपर जो हमने एलिमेंट रखा हुआ है वो आराम से बैठा हुआ है, प्रेशर विद इन लिमिट है। जैसे ही प्रेशर अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो वो एलिमेंट हिलना शुरू हो जाता है। वो क्यों हिलता है? क्योंकि उस एलिमेंट को जिस नोजल पे लगाया हुआ है, प्रेशर कुकर की अंदर वाली साइड पे उस नोजल के नीचे इस तरह का एक वेंट वाल्व होता है। जब स्टीम हाई प्रेशर बनाती है तो वो वेंट ओपन हो जाता है, स्टीम बाहर आती है और वो उस एलिमेंट को या सीटी को हिलाना शुरू करती है। जैसे ही प्रेशर नॉर्मल होता है ये वाल्व बंद हो जाता है खुद ही, क्योंकि स्टीम का प्रेशर अब अंदर नॉर्मल हो गया, तो वो जो सीटी पर रखी होती है उसकी मूवमेंट भी कम हो जाती है। एक चीज ये है वेंट के वाले से। दूसरी, जब हम हार्ड वाटर और सॉल्ट्स को हमने किस क्वांटिटी में मेजर करना है, किस फ्लो रेट में मेजर करना है, वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ये लगा हुआ है, कंट्रोल सिस्टम। जो भी हार्डनेस हो उसके अकॉर्डिंगली मेजर्ड अमाउंट केमिकल्स की टैंक में जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर हाई है, सॉल्ट की हार्ड वाटर में सॉलेबिलिटी बढ़ेगी, और जैसे ही सॉलेबिलिटी बढ़ेगी अब प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो वाटर जो है वो टैंक से बाहर आना शुरू हो जाएगा। प्रेसिपिटेट्स बॉटम में बैठेंगे, सॉफ्ट वाटर रेज होगा, जो स्लज बनेगी प्रेसिपिटेट्स की उसको बॉटम से रिमूव करेंगे, जो सॉफ्ट वाटर होगा। और अगर ये प्रेसिपिटेट्स फाइन साइज के हैं जो रिमूव नहीं हुए, सेटल नहीं हुए, वो सॉफ्ट वाटर के साथ टॉप ऑफ द टैंक से हम उसको लेंगे। क्योंकि इसमें फाइन प्रेसिपिटेट्स हो सकते हैं, तो हम इस सॉफ्ट वाटर को जिसमें फाइन प्रेसिपिटेट है फिल्टर में से पास करेंगे। फिल्टर उन फाइन पार्टिकल्स को रिटेन करेगा और हमें क्लियर सॉफ्ट वाटर प्रोवाइड करेगा इस लाइन से, जिसको हम बॉयलर्स की तरह देखेंगे। अब जैसे जैसे फिल्ट्रेशन होती जाएगी फिल्टर की ओपनिंग्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी। तो एक टाइम आएगा कि फिल्टर फिल्ट्रेशन नहीं करेगा, इसको सैचुरेशन या एग्जॉस्ट पॉइंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फिल्टर की ओपनिंग को अनब्लॉक करना पड़ेगा, दोबारा से फ्रेश करना पड़ेगा, उसको रीजनरेट करना पड़ेगा। तो इस रीजनरेशन साइकिल में हम क्या करते हैं कि इसी सॉफ्ट वाटर को लेते हैं, उसको हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, और उनको फिल्टर में से पास करते हैं इन दी डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट टू दी नॉर्मल ऑपरेशन। जब वाटर ऑपोजिट डायरेक्शन में हाई प्रेशर में उस फिल्टर से पास होगा तो वो जिन पार्टिकल्स ने फिल्टर ओपनिंग को ब्लॉक किया होगा उनको उन ओपनिंग से बाहर निकालेगा और फिल्टर से उन पार्टिकल्स को अपने साथ लेके इस लाइन को फॉलो करते हुए वापस टैंक में आ जाएगा। यहाँ पे अगेन हम हार्डनेस को सॉफ्टनेस में कन्वर्ट कर रहे होंगे और इस तरह से ये सारा साइकिल चलता है। सर काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके जी, वन मोर टाइम। तो दिस इज दी वेसल टैंक, और इस लाइन से हार्ड वाटर, आप काइंडली लेजर पॉइंटर को फॉलो करें, वो इस वेसल में जाएगा। इस लाइन से वाटर सॉफ्टनिंग सॉल्ट वो इस वेसल में जाएंगे, और क्योंकि ये हॉट ऑक्साइड हॉट लाइन सोडा प्रोसेस है तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, और वाटर को बॉयल अप से रोकने के लिए हाई प्रेशर भी चाहिए। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव हम इस स्टीम से अचीव करते हैं। स्टीम को हम सिस्टम में ऐड करते हैं, स्टीम चूंकि वाटर की ही बनी होती है इसलिए ये इम्प्योरिटी कॉज नहीं करती, और ये टेम्परेचर भी बढ़ाती है और प्रेशर भी बढ़ाती है। अगर हम प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमसे स्टीम का फ्लो रेट कंट्रोल नहीं हो रहा, वो बहुत ज़्यादा हो गया है, किसी भी वजह से प्लांट में कोई मसला आ गया और स्टीम के फ्लो रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जितनी ज़्यादा स्टीम अंदर जाएगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर अंदर बढ़ेगा। तो उस प्रेशर, उस इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि अगर स्टीम का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो एक पॉइंट आएगा ये वेसल ब्लास्ट कर जाएगी, तो उस पॉइंट से बचने के लिए हमने एक वेंट लगाई हुई है, एक वेल्व। जैसे कि प्रेशर कुकर के ऊपर एक नोजल लगी होती है, तो जब स्टीम का प्रेशर लिमिट से बढ़ता है ये वेल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, किसी इंसान की जरूरत नहीं होती इसको ओपन करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली ओपन होती है। जैसे ही ओपन होती है तो एक्सेसिव स्टीम इस लाइन से बाहर आ जाती है,
जैसे ही सिस्टम के अंदर प्रेशर नॉर्मल डिजायर्ड रेंज में वापस आ जाता है, ये वैल्व ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो हमने वाटर सॉफ्टनिंग सॉल्ट और हार्ड वाटर ऐड किए हुए हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से मिक्सिंग अच्छी होती है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और जैसे ही वाटर बाहर आता है इस इनर सेक्शन से आउटर सेक्शन में, तो प्रेसिपिटेट्स जो बनते हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, और वाटर जो सॉफ्ट वाटर है वो इस वेसल में रेज होता है। तो जो सॉफ्ट वाटर होता है उसको हम टॉप से रिमूव करते हैं। अगर इस वाटर में कुछ फाइन साइज के प्रेसिपिटेट्स हों जो सेटल नहीं हो सके, क्योंकि हमने इसमें कोवैलेंट ड्रॉपलेट डाला हुआ, अगर वो सेटल नहीं हो सके तो इस सॉफ्ट वाटर को जिसमें कुछ पार्टिकल्स हैं हम एक फिल्टर में से पास करेंगे। फिल्टर पार्टिकल्स को रिटेन करेगा और क्लियर सॉफ्ट वाटर हमें इस लाइन के थ्रू प्रोवाइड कर देगा। जैसे जैसे फिल्ट्रेशन होती जाएगी फिल्टर की ओपनिंग ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी और एक टाइम आएगा कि वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें उन फिल्टर्स को की ओपनिंग को अनब्लॉक करना होता है कि ओपनिंग्स में जो पार्टिकल फंसे हुए हैं उनको उन ओपनिंग से बाहर निकालना होता है। तो फिल्टर को ओपनिंग्स को अनब्लॉक करने के प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। तो उस रीजनरेशन के लिए हम इसी वेसल में से वो सॉफ्ट वाटर लेते हैं, इसी वाटर को प्रेशराइज करते हैं, एनर्जी देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, और इस प्रेशराइज्ड वाटर सॉफ्ट वाटर को फिल्टर में से पास करते हैं इन ए डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट टू दी नॉर्मल ऑपरेशन। लाइक अगर नॉर्मल ऑपरेशन में फिल्ट्रेशन हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम रीजनरेशन करेंगे तो हम इस प्रेशराइज्ड वाटर को राइट टू लेफ्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑपरेशनल फ्लो। तो जब वो प्रेशराइज वाटर फिल्टर की ओपनिंग में से पास होगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स फंसे हुए होंगे वो उनको वहां से निकालेगा, फिल्टर्स की ओपनिंग्स को अनब्लॉक करेगा, और उन पार्टिकल्स को लेता हुआ वो वाटर इस लाइन को फॉलो करेगा और वापस इसी वेसल में आ जाएगा जहाँ से दोबारा हम हार्डनेस रिमूवल का साइकिल करेंगे। जो स्लज या प्रेसिपिटेट्स बन रहे होंगे उनको हम वेसल से इस बॉटम वेल्व के थ्रू रिमूव करते जाएंगे। जी अब कोई सवाल? सर यस सर सर यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। हाँ जी। सर फिर प्रेसिपिटेट कैसे बनेंगे? हमने सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है इन सॉल्ट्स की इस वाटर में, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी इस वाटर में। हमने हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ानी, हमने इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है इस केमिकल फीड की जो कि वाटर सॉफ्टनिंग सॉल्ट है। ठीक हो गया सर। कोई और सवाल यहाँ तक? जी जो फिल्टर के ऊपर जो ये इनलेट आ रही है ये किसकी है? दो इनलेट आ रही है, नीचे वाली इनलेट किसकी है? जहाँ पे अभी मेरा पॉइंटर है ये उस नो सॉफ्ट सर, वाटर इसके की ऊपर इनलेट, फिल्टर्स के ऊपर ये वाली। ये वाला जहाँ पॉइंटर है ये वाली वो उस वाटर की इनलेट है जिसने इन फिल्टर्स में से फिल्टर होना है और हमें क्लियर सॉफ्ट वाटर प्रोवाइड करना है। तो फिल्टर होने के बाद वो वाटर इस लाइन से बाहर आ जाएगा। अगर इस फिल्टर में से गुजर रहा है तो इस तरह से, अगर इस वाले में से गुजर रहा है तो इस लाइन को फॉलो करेगा, अगर इस वाले में से गुजर रहा है तो यहाँ से बाहर आएगा। जी कोई और सवाल? सर जैसा कि आपने पहले बताया कि वेंट जो इसलिए रखा जाता है ताकि प्रेशर कंट्रोल करें वरना ब्लास्ट हो जाएगा, तो सर फिल्टर वाले उसमें भी सेम सीन होगा ना कि इतना प्रेशर कंट्रोल करना होगा, वरना अगर ज़्यादा प्रेशर हो तो फिल्टर तो सारे ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, पहली चीज ये जो वेंट है ना, these are specially designed for systems which have gases at high pressure। क्योंकि जो गैसेस हाई प्रेशर पे होती है ना वो बॉम्ब की तरह काम करती है।
जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, जैसे ही उसकी लिमिट से बाहर जाएगा प्रेशर वो ब्लास्ट करेगा। तो जो जो वो सिस्टम जिसमें गैसेस हाई प्रेशर में हो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और उनकी सेफ्टी के लिए हमें उसमें बहुत से चेक्स लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक ही चेक लगा हुआ है, जो जैसा कि हमारे प्रेशर कुकर में होता है, एक वेंट। तो ये गैसियस स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अब इधर आ जाए, इधर है लिक्विड वाटर, और इस प्रेशराइज वाटर ने पास होना है फिल्टर में से, विच इज ए सॉलिड सरफेस, मैश टाइप ओपनिंग होगी उस सॉलिड। तो इस केस में जो एनर्जी होगी इस प्रेशराइज वाटर की, वो सारी की सारी सस्टेन करनी है, बर्दाश्त करनी है फिल्टर ने या टैंक की वेसल ने। तो हम अपने फिल्टर का वेट और टैंक वेसल की वॉल की थिकनेस वो वाली सिलेक्ट करेंगे जो इस हाई प्रेशर वाटर को सस्टेन कर सकती है। ऑब्वियसली अगर प्रेशर हाई होगा वाटर का, और या तो फिल्टर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, या टैंक की वॉल्स में हिम्मत नहीं है कि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, तो ये सिस्टम भी डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर जाए। तो यूजुअली नॉर्मल ऑपरेशन रखने के लिए, सेफ ऑपरेशन रखने के लिए हमने प्रेशर लिमिट्स लिक्विड और गैसेस की स्टडी की होती है। Okay, sir. Any other question? Okay, if not, moving on. Then comes the comparison of hot lime soda process and cold lime soda process. Now keep this thing in mind that hot lime soda process is taking place at high temperature than cold lime soda process. So since hot lime soda process is taking place at high temperature, so the time required for this process is less than the cold lime soda process, because increase in temperature increases the solubility of water softening salts. So usually hot lime soda process takes 15 minutes, up to 15 minutes, while cold lime soda process can take several hours. Now, how would we know at what instant we need to stop the process, or when we can take out the water from these tanks? So we will keep monitoring the hardness of the soft water. If it comes out to be 50 to 60 ppm, in case of cold lime soda process, we will start taking out the product. And in case of hot lime soda process, this concentration is 10 to 20 ppm. So when we see the soft water hardness is 10 to 20 ppm, then we'll start taking out the product from hot lime soda process. So time requirement in hot process is less than the cold process. The softening capacity of hot process is more. Why? Because it takes less time. We can process more amount of water through this process than in cold, than in cold like soda. The precipitate and sludge form settle rapidly, and we do not require any coagulant in case of hot lime soda process. Why is it so? Because at high temperature, the viscosity of the liquids decreases. When we start increasing the temperature, the viscosity of the liquids start to decrease. So when the viscosity of a liquid is low, then it becomes easier for the precipitates to settle down. So that is why the precipitate and sludge forms settle rapidly, and in case of hot lime soda process, we do not require any liquids. If there is any gas in the water, so in case of hot lime soda process, when we'll start increasing the temperature, the heat or the energy will also go into the gas rather in water. When the gas molecules will get energy, they will start escaping the water or liquid.
So hot lime soda process also helps in the removal of any dissolved gases present in water. And comparatively, the residual hardness of soft water in case of hot lime soda process is 10 to 20 ppm, while in case of cold lime soda process, it is up to 50 to 60 ppm. एक्सक्यूज मी सर Yes. सर पॉइंट नंबर 3 दोबारा समझा दें थोड़ा सा Okay. This point number 3 is connected with this point number 5. Right? तो इन दोनों को साथ ब साथ देखना। हम जब भी किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, उसकी विस्कोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, द रेजिस्टेंस बिटवीन लेयर ऑफ अ लिक्विड। तो जैसे ही उसकी विस्कोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर हाई है, विस्कोसिटी कम होगी, तो जिन सॉलिड पार्टिकल्स ने उसकी पूरी बॉडी में से गुजर कर बॉटम पे जाके बैठना है, तो जब ऐसे लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी तो पार्टिकल्स इजीली उसकी बॉडी में से ट्रेवल करते हुए सेटल डाउन हो जाएंगे। जब लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स इजीली ट्रेवल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए पार्टिकल्स जल्दी से बैठ जाते हैं। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में टेम्परेचर कम है, इसलिए पार्टिकल्स ज्यादा टाइम लेते हैं। तो क्योंकि सेटलिंग आसान है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में, इसलिए हम कोएगुलेंट्स ऐड नहीं करेंगे। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में सेटलिंग आसान नहीं है, इसलिए कोएगुलेंट्स ऐड करेंगे। कॉमन एग्जांपल है, आप वाटर ले लो और शहद ले लो या ऑयल ले लो। शहद और ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो आप उसमें कोई चीज सॉलिड चीज फेंकोगे वो देर से सेटल होगी। वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, आप उसमें कुछ सॉलिड चीज फेंकोगे वो जल्दी से नीचे जाके बैठ जाएगी। तो टेम्परेचर हाई होने से विस्कोसिटी कम होने से हॉट लाइम सोडा में प्रेसिपिटेट सेटलिंग आसान होती है। कोई और सवाल? नो क्वेश्चन? No, sir. We then stop your अपने रोल नंबर जो है वो चैट में ड्रॉप कर दें और सीआर से रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस मार्क